सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दा आगाज़ करांगे पर एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। इंडोनेशिया के बाली विच सालाना G20 सम्मेलन की हुई शुरुआत। दुनिया भर के बड़े नेता हो रहे हैं शामिल। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया संबोधन, वख-वख मुद्दों पर रखे अपने विचार। हिमाचल के धौलाधार पर्वत से लापता होया अमरीकी नागरिक, भाल विच जुटी पुलिस। अमरीका विच इदाहो यूनिवर्सिटी कंपलैक्स नेड़े एक मकान विचों मिलियां लाशां, इलाके विच फैली सनसनी। अमरीका विच कैंटकी विच हादसे का शिकार हुई स्कूल बस, 18 बच्चे हुए जख्मी। तो बुलेटिन की शुरुआत करन जा रहे हैं इंडोनेशिया तो। इंडोनेशिया के बाली विच सालाना G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, जिस विच दुनिया भर के बड़े नेता शामिल हुए हैं। शिखर सम्मेलन के पहले दिन संबोधन करदे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ग्लोबल मुद्दों का जिक्र किया, दुनिया नूं हल लभण लई इकट्ठे होकर काम करन दा सद्दा भी दिता। अपने संबोधन विच पीएम मोदी ने कहा कि अज दुनिया नूं G20 तो बहुत सारिया उम्मीदां ने, इसलिए साडे ग्रुप की सार्थकता वध गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, कोविड, ग्लोबल महामारी और यूक्रेन का हवाला देंदे हुए विश्व पद्धर ते चुनौती भरे माहौल के विचाले G20 की अगवाई करने लई इंडोनेशिया की तारीफ भी की। रूस यूक्रेन विचाले चल रही लड़ाई नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह बार-बार कह रहे हैं कि सानू यूक्रेन विच जंगबंदी और कूटनीति के राह विच वापस आउण दे रस्ते की भाल करनी होएगी। रूस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान खुराक ऊर्जा सुरक्षा सैशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना ते रूस यूक्रेन विचाले जारी लड़ाई की वजह करके दुनिया की सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई है। इस कारण संसार में तबाही फैल गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र वर्गियां संस्थावां इन्हां मुद्दों ते असफल साबित हो रही हैं, जिसलिए सानू सारिआं नूं मिल के यूक्रेन विच जंग नूं रोकण दा रस्ता लभना पएगा। कांगड़ा के धौलाधार माउंटेन रेंज से एक अमरीकी नागरिक के लापता होने की जानकारी मिलने ते कांगड़ा पुलिस ने उसकी भाल विच तलाशी मुहिम आरंभ दी है। मैकमिलन एडरसन बीते कुछ दिनों तो नदी किनारे बने होटल विच रह रहा सी। एडरसन रोजाना पहाड़ों से ट्रैकिंग करन जांदा सी अते 8 नवंबर नूं उसने ट्रैकिंग दौरान होटल मालकां नूं फोन कर रहा सी कि वह पहाड़ों में फस गया ते उस कोल खाने का समान भी घट है। इस तो बाद उसका फोन बंद हो गया। एसपी ने कहा कि स्थानक पुलिस नूं इसकी जानकारी देने की बजाय होटल मालकां ने खुद ही उसकी भाल करनी शुरू कर दी। कांगड़ा पुलिस नूं इस मामले की जानकारी 10 नवंबर नूं मिली, जदों अमरीकी दूतकर ने एडरसन के लापता होने की सूचना दी। इस तो बाद ही कांगड़ा पुलिस ने पहाड़ी खेतर में उसकी भाल करनी शुरू कर दी। एडरसन का पता करने लई स्नीफर कुत्तियां, पुलिस पार्टियां ते स्थानक ट्रैक्टरां की टीम नूं मंगलवार नूं धौलाधार पहाड़ी श्रेणियां विच भेजा गया सी। हालांकि जो लोग इस तलाशी मुहिम विच काम कर रहे हैं, उन्हां मुताबिक एडरसन के बचन की संभावना बहुत घट है, क्योंकि उसनूं लापता हुए लगभग एक हफ्ते का समा हो गया है। अमरीका विच इदाहो यूनिवर्सिटी कंपलैक्स नेड़े स्थित एक मकान विचों 4 लाशां मिलियां। पुलिस ने इस सिलसिले विच जांच आरंभ दी है। प्रशासन वालों एक जारी बयान विच दस्सिया गया कि मास्को पुलिस महकमे के अधिकारी घटना की जानकारी मिलने तो तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। यह मकान यूनिवर्सिटी कंपलैक्स तो कुछ ही दूरी पर स्थित है। अधिकारियों ने मृतकों की पछाण, उन्हां विच कोई विद्यार्थी है या नहीं, इस संबंध विच फिलहाल कोई विस्तारपूर्वक जानकारी सांझी नहीं की है। पुलिस ने दस्सिया कि परिवार नूं घटना की सूचना देने मगरों ही कोई जानकारी सांझी की जाएगी। इदाहो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने घटना तो बाद करीब 1 घंटे तक विद्यार्थियों नूं बाहर नहीं निकलन दिता, ताकि जांचकर्ता अपनी पूरी जांच कर सकन। उन्हां दी जान नूं खतरा तो नहीं है। अमरीका विखे देहाती कैंटकी विच बीते दिनी एक स्कूल बस हादसाग्रस्त हो गई। इस हादसे विच 18 बच्चियां ते ड्राइवर नूं मामूली तो लैके गंभीर सट्टां दे नाल हस्पताल विच दाखल कराया गया। मैगोफिन काउंटी स्कूलों के सुपरिटेंडेंट क्रिस मिडोस ने कहा कि हाई स्कूल तो प्राइमरी उम्र के विद्यार्थी बस विच सवार सन, जदों यह हादसा पूर्वी कैंटकी विच सैलेस्ट्रीविले नेड़े एक हाईवे ते वापरिया।
ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਏਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Today and yesterday, we participated in the Association of Southeast Asian Nations Summit with our partners here in Cambodia. We announced the great news that ASEAN will elevate our relationship to a strategic partnership. This is an endorsement of Canada's engagement in the region and a step forward towards much closer relations between our countries and our peoples moving forward. Expanding our partnerships and economic ties with countries here is critical for Canada. Earlier this week, Minister Joly announced our upcoming Indo-Pacific strategy. This will be a major shift to strengthen our engagement in the region in the long term. ASEAN is central to the Indo-Pacific region where we are right now. It's a growing hub for trade and investment that fosters open markets and creates good, meaningful jobs now and into the future as the Canadian economy grows. The Indo-Pacific is a priority for Canadians. We'll also invest in a new Canadian trade gateway in Southeast Asia, a trade gateway that will help Canadian businesses expand into Indo-Pacific markets, linking them to incubators, entrepreneurs, and accelerators. These investments will mean more jobs for Canadians and more growth for ASEAN economies. While we invest to create more jobs and more opportunities for people, we're also working to build a more resilient future. Around the world, over the past years, we've been seeing flooding, hurricanes, and wildfires caused by climate change. The consequences of climate change are real for our communities and for our economies. Many countries in Southeast Asia, especially coastal ones with islands, just like Canada, are even more vulnerable to climate change. Over the next 5 years, we'll invest here in the Indo-Pacific region to increase international assistance to partner countries, including support for sustainable and climate-resilient infrastructure. We're also stepping up our work to protect the environment. Canada has world-class expertise in oceans management, and we can use this expertise to help. We're committed to keep the ocean healthy in the Indo-Pacific region, and we'll invest to create a new Shared Oceans Fund. This will include support for measures against illegal, unreported, and unregulated fishing. Keeping our oceans healthy is important for the environment, and it's also important for jobs, trade, and security. Canada is home to some of the largest diasporas of Southeast Asians in the world. To continue strengthening ties between our peoples, we'll expand the successful Canada-ASEAN Scholarships and Exchanges program. Southeast Asian students enrich our universities and communities, and we want to provide them with even more opportunities to study in Canada. ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5.7 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 5.7 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। As the minister was saying, when we talk to the people of Ontario, we hear the same thing. It doesn't matter if you're a construction worker, a taxi driver, a small business owner, a senior living on fixed income, or a newcomer to our province just starting their career, everyone is concerned about the same thing. And that's how expensive life is getting for them. From gas to groceries, prices are higher, and that's putting real pressure on household budgets. The fact is, people need a little bit of help.
That's why this past summer we cut the gas tax by nearly 40%, saving Ontarians 10 cents per litre of gas. That was real money back in their pocket, giving them some room to spend more on the things they need. And today, we're announcing our plan to extend that tax cut for another year. Tomorrow, we'll introduce legislation to extend the gas tax cut for another year, delivering some needed relief at the pumps for drivers and businesses for one more year. Extending the tax cut for an additional year will mean the average Ontario household will save $195. We know that every dollar helps. And this gas tax cut is another way we're delivering savings to Ontario households. From permanently removing tolls on Highway 412 and 418 and eliminating license plate sticker fees, we have taken concrete action to make life more affordable for Ontario families. But my friends, we know there's more to do. We must stay focused, and we can't take anything for granted. As we navigate global economic uncertainty, our government has been hard at work, building an economy that can weather any storm. Any economy that never loses sight of what's most important: helping people succeed, helping workers succeed. That starts with creating the economic conditions that attract investments in growth and good jobs. We've cut red tape to reduce the cost of doing business in Ontario by $7 billion annually. We've kept taxes for people and businesses low. We're investing in the skilled trades and a workforce that's prepared for the jobs of today and tomorrow. We're building roads and highways like the Bradford Bypass and Highway 413 that tackle gridlock and get goods to market sooner. We're making investments to improve this competitive advantage, to ensure that Ontario remains the greatest place anywhere to live, work, and raise a family. And while the world faces economic uncertainty and our challenges with inflation are not over, one thing I have complete confidence in is the people of Ontario. There are no harder working people on earth. And I know that together we will accomplish incredible things. Together we will build Ontario. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Remembrance Day is both a time to honor the brave women and men in uniform who made the ultimate sacrifice in defense of democracy. I'm here today for Remembrance Day and to ensure that we are recognizing a group called Coding for Veterans. They provide support and education in the digital and cyberspace areas to help Canadian Armed Forces members transfer to the work sector. And the veterans are able to tap into this organization to gain more skills, more education, so that they're more marketable when they are moving towards employment. And the success rate of Coding for Veterans in terms of placing their students is extremely high, and that signifies that it is playing a useful role for the veterans of today and tomorrow. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਅਚੀਵ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੂਮਨ ਸਰਵਿਸ ਪਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Our new women's pillar that supports women and girls as they settle here in Canada and thrive. Achieve has been around for 30 years. We have 400 staff and 9 offices across the GTA, but we also serve our clients online. So our clients are here in Ontario, across Canada, and in fact, globally. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ to celebrate the women pillars launch. Quick ਜਾਣਕਾਰੀ about Achieve. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ settlement, employment,
यूथ और वुमेन ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਗਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਫਾਰਮਲੀ ਔਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵੂਮਨਸ ਪਿਲਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਨਿਊਕਮਰ ਵੂਮਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲਾਂਚ ਐਂਡ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਂਚ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਿਊਕਮਰ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ The Achieve program has actually helped me, actually, because I was a client back in 2017. It's helped me to overcome a lot of obstacles in life. Being a mother, a student, and working at the same time, I was able to overcome so much barriers from the support from Achieve. They are able to acquire and help me to get the necessary support I need financially, helping me with resume building, helping me with the clothes that I need to get me started. So I really appreciate all the support from Achieve and the dedication from all the staff. And just being here is just exciting. I just leave this with you for all the women that are looking for a chance to be able to get their foot in the door and get started. Achieve is the best place to come. They provide you a lot of support. You can be able to get the opportunity to accomplish your goals and get into the career that you're looking for. So don't give up and keep going. We have seen women many times because when they come here, when they have younger children, sometimes there is a lack in them to get into the job market. So ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ which will be dedicated, committed for all the women. ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ each and every member of our community. If you know somebody who is a newcomer, please send them to Achieve. They have many locations. One of them is in Malton. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ you can fast track the performance, you can get ahead of the career. ਔਰ again मैं कहांगा if you know somebody who is looking for help, please send it to them to Achieve. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। Well, I follow the direction from Dr. Moore. I've said that from day one. Dr. Moore will be out tomorrow with Dr. Simpson. We have experts all over this right now. We have, as I mentioned, Dr. Moore, Dr. Simpson from Ontario Health, along with Matt Anderson, along with Dr. Zahn, the Deputy Minister. And let's not forget Michelle D. Emmanuel that ran Trillium Hospital as well. I was in conversations with 7 hospitals across Ontario on Friday. I spoke to every single CEO. We're pulling out every single stop along with them to make sure that we have the capacity to handle the flu season. So I just, a couple things. Wear a mask every time possible, number one. Number two, get a vaccination shot, and if you haven't already received yours, and get a flu shot. So those are the recommendations I have, but I have confidence in the system that yes, will there be bumps in the road, and we're working on solutions every single day. They're being very creative. Each CEO that I spoke to, they're thinking outside the box. No matter if it's Geo up in Ottawa, bringing in Orange paramedics, highly trained, and or just making sure that we continue to hire more nurses. Folks, this is what it comes down to. We need more doctors, more nurses, and we're doing both. Making sure that we build the infrastructure that we're doing. We're spending $40 billion on 50 additions, and I wish I could snap my fingers and add more hospitals immediately. But it was from decades of neglect that we're in this position on the capacity, and we're just going to continue building. And that's going to maybe take a couple of years, but we're going to continue doing that, investing into healthcare. We're investing more money into healthcare than any province in the history of this country, and we're going to continue doing that.
We've brought in the system through the College of Nurses, over 14,700 more nurses this year alone, and that's more than we've ever seen. We're bringing more doctors online. We're building a medical university. We've added over 3,100 beds. We're bringing on another 3,000 beds. So we're doing quite a bit. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। At the core of our engagement in the region is ASEAN, this very important organization which regroups many countries of the region. And today I'm glad to announce that Canada will become a strategic partner for ASEAN, and that is important. Why? Because it brings Canada to the table for the long run, for the long term, talking to these countries and engaging together on key aspects of the region. I also had the chance to meet with my colleagues from India, from Vietnam and from Ukraine a bit earlier today. And also I would like just to remind you the important announcement that the Prime Minister made regarding the beginning of the unveiling of our Indo-Pacific strategy, particularly more development assistance for the region. Second, scholarships for Canadians wanting to study here in the region, and people from ASEAN countries wanting to study in Canada, and also an important ocean management fund, which will be extremely important to tackle the issue of illegal fishing and everything linked with the respect of the UN Convention on the Law of the Sea. Reality is Canada sits next to China at the G20. Because Canada and China are in alphabetical order, so we'll have on occasions to, moments to engage, and we will do so. And as I said just in French, our approach is principled. We said that we would be challenging when we ought to. We said that we would be cooperating when we must, when it comes to China. China is a global disruptive power, and now we've just outlined exactly how we will engage with China. Minister Kuleba and I talk to each other pretty much every week, so we're now very good friends. I wanted to update him from my meetings at the G7 that happened in Germany last week. I wanted to make sure to understand what was happening on the ground in Ukraine and just reiterate our steadfast support to Ukraine. Definitely we've done a lot, but we will do more, and more will be announced in the coming days. Sergey Lavrov is here right now. He's also going to be at the G20 by the sounds of it. Any chance that you are going to want to meet with him to discuss the war in Ukraine? Well, we've been clear with Russia. Our goal is to isolate Russia economically, politically and diplomatically. ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਾਚੀ ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਖਾਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी माणिया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। मैच की स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो मतलब इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ये वी डिड दैट। लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ, जब ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ था, और वी गॉट मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी। लोग आए, लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, साथ हमने जो है वो फ्री ब्रेकफास्ट भी उनको ऑफर किया था। So it was like a very good experience क्योंकि और fortunately पाकिस्तान उसमें जीता भी था बड़े अच्छे तरीके से, तो वो कहते हैं ना कि मजा दुबाला हो गया था। तो उसके बाद फिर जब इस साल T20 वर्ल्ड कप आया तो हमने लोगों ने फिर हमसे डिमांड करनी शुरू की कि भाई आप लोग करें, तो हमने फिर पाकिस्तान इंडिया मैच की स्क्रीनिंग की। ऑल्दो इस टाइम सबसे बड़ा इशू ये था कि इट वॉज इन द मिडल ऑफ द नाइट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की शाम और हमारी रात का बिल्कुल वो मिड था। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा था, मैंने कहा आ जाएंगे 5-10 लोग उठ के आ जाएंगे, लेकिन हाउस वॉज टोटली फुल। पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है कि वो तो कोई भी मिस नहीं करना चाहता, और खास तौर पे जब हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई हो तो उसके साथ तो फिर एंगेज करना भी बहुत जरूरी है।
So the same thing happened. Pakistan India का मैच, मैसिव रिस्पॉन्स, इट वाज अ नेल बाइटर, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया सारों ने. फिर उसके बाद सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो भी इट वाज अ वीक डे, वीक नाइट इनफैक्ट आई वुड से. उसमें भी लोगों ने बड़ा भरपूर पार्टिसिपेट किया. और फाइनल के लिए तो मैं कहता हूं कि वी जस्ट ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर 10 आवर्स, और 10 आवर्स में हमारी कैपेसिटी वाज टोटली फुल. और उसके बाद आई वॉज गेटिंग, मैं आपको बताऊं, 2 दिन से कॉल्स पे कॉल्स, प्लीज अकोमोडेट कर दें, प्लीज हमें आप मैच में कर दें. मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मतलब मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी उनको सॉरी कहते हुए, क्योंकि सेफ्टी इशू आ जाता है. ऑब्वियसली बात है, एक जगह की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा लोग उसमें आ जाए तो सेफ्टी इशू आ जाता है. सदियों से चलती आ रही है. और स्पेशली मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ये राइवलरी रहनी चाहिए, बिकॉज अच्छा रहता है, गेम में इंटरेस्ट डेवलप रहता है, एक्साइटमेंट डेवलप रहती है. बिकॉज हम कनाडा में रहते हैं, कनाडा में हमारे इंडियंस भाई हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, डेली बेसिस पे हमारी जो है कुछ ना कुछ उनके साथ डीलिंग हो रही होती है. सो वो कहते हैं ना, बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक है, बिल्कुल एक भाई बंदी वाला ताल्लुक है. बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैच स्पेशली, तो फिर तो वो कहते हैं ना, ठन जाती है आपस में, कौन परफॉर्म करेगा. विराट कोहली जो है ना, वो आज सेंचुरी मारने वाला है. रोहित शर्मा ने तो आज ऐसी बॉलिंग करनी है कि छा जाएगा. और अमनदीप की बॉल तो पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आएगी. और हम फिर रिटर्न में यही कह रहे होते हैं कि भाई तुम लोगों को कौन सा शाहीन शाह अफरीदी समझ आ रहा होता है, और बाबर आजम चल पड़ा ना, तो फिर तुम्हारी जो है ना वो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी. एंड वी यूज्ड टू डू द सेम बैक होम. पाकिस्तान इंडिया में भी हम इसी तरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. तो ये बड़ा एक कहते हैं ना कि खुशगवार सा एहसास होता है. इट्स अ प्लेजेंट फीलिंग, बिकॉज आप इतने 7 समंदर पार बैठे हुए हो, और वहां पर आप अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं. वो सरप्राइज के आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो है ना, वो उनको हम चाहते हैं कि वो इंगेज हो इन चीजों. ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀਵਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ. ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ. ਧੰਨਵਾਦ. वक्त बदला तो वक्त के साथ बदले एंटरटेनमेंट के साधन भी. ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप. ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप एंड्रॉयड टीवी और सेट टॉप बॉक्स गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ड्राइव करते समय ब्लूटूथ द्वारा रेडियो भी सुन सकते हैं. सो जल्दी से जल्दी खुद भी ये ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये जानकारी शेयर कीजिए. ई बाबा एंटरटेनमेंट ऐप.